Assalamu alaikum everyone. It's the highest chase in PSL history again for the third time this week. Peshawar failed to defend 240 for the second time this week, and Riley Rosso does what Jason Roy did earlier this week. On that note, let's start about the match. And Multan this time पहले क्वेटा ने किया, मुल्तान ने किया, 240 ऐसे ऐसे चेज हो रहे हैं. व्हाट इज दिस रावलपिंडी पिच? आई डोंट थिंक आई हैव सीन अ फ्लैटर सरफेस देन दिस इन माई लाइफ. अगर 240 ऐसे ऐसे चेज हो रहे हैं तो इट्स ऑनेस्टली अ प्रीटी डेंजरस साइन फॉर द बॉलर्स. आई थिंक उन सबको तो वाकई थेरेपिस्ट जाना पड़ेगा. ज़रा पेशावर की बैटिंग के बारे में बात करते हैं. साइम अयूब, बाबर आजम, व्हाट एन ओपनिंग पार्टनरशिप वी सॉ. 50 फॉर साइम, 73 फॉर बाबर. आज कोई स्ट्राइक रेट के बारे में भी इशू नहीं थे बाय द वे. And Babar has really taken a liking to this Rawalpindi pitch. A century in the last game, 73 today. Saim has well been very consistent, and then Mohammad Haris. A strike rate of 320 knocked the wind out of Multan's sails. Brilliant from him. Bowling wise, ज़रा मुल्तान की bowling में Abbas Afridi, of course, pick of the bowlers, got rid of a lot of players, got rid of Babar Azam, got rid of Saim, got rid of Haris. Took a 4 for on this incredibly flat pitch, which is definitely a pretty big achievement. And up he's in the running for the Fazal Mahmood cap as well. Taken 17 wickets already this PSL. ये वाकई उसके लिए एक breakout season है. पिछले साल उसने सिर्फ फाइनल में परफॉर्म किया था लाहौर के खिलाफ when he took a couple of wickets up front, but this year he's really shown his class, especially at the death, because he just take wickets. चाहे वो रन्स पड़ने जो भी हो रहे, अब्बास विल ऑलवेज टेक यू विकेट्स. एहसानुल्लाह की भी आज बात करते हैं. ब्रिलियंट बॉलिंग फ्रॉम हिम. लोग कहेंगे आज एहसानुल्लाह ने कोई आउट नहीं किया, फालतू बॉलिंग की है. ऐसी कोई बात नहीं है भाई. इकोनॉमी ऑफ 8.8, जब 240 का मैच हो रहा है, रन रेट्स 12 की जा रही हैं, तो इकोनॉमी ऑफ 8.8 इज रियली ब्रिलियंट. डजंट मैटर ही डिडंट गेट अ विकेट. फैबुलस एफर्ट फ्रॉम हिम नॉनदलेस. आज मुल्तान मेड अ चेंज बिकॉज डेविड मिलर couldn't play. They got in Sheldon Cottrell. ऑनेस्टली उसने कोई इतना खास फ़ायदा तो नहीं किया है. 12 की इकॉनमी थी, उसको ओवर्स भी फिर पूरे नहीं कराए. बट अनवर अली डिड कंप्लीट हिज कोटा एक्चुअली, एंड प्रॉब्ली उसकी जगह आखिरी ओवर कॉट्रेल को ही देना चाहिए था बिकॉज दैट वाज वेरी एवरेज बॉलिंग इन द फाइनल ओवर. वेल, नॉट एवरेज बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सरफेस टू बॉल, बट व्हाट कैडमोर डिड टू हिम. पेशावर ने अपने आखिरी इनिंग्स, दे वर लुकिंग लाइक अ मे बी 210 220 काइंड ऑफ टोटल. आखिरी 2-3 ओवर में कैडमोर और अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने जो तबाही मचाई है ना, दैट्स व्हाई दे गॉट टू 240. दे टारगेटेड अनवर अली एट द डेथ, एब्सोल्युटली सेंट हिम आउट ऑफ द पार्क. 66 runs conceded, economy of 16.5 for Anwar. A disappointing day out for him with the ball, although he did somewhat make up for it with the bat. पेशावर की बैटिंग में पावल आज नहीं चल पाए. कैडमोर, ऑफ कोर्स, अ फैबुलस परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम. हसीबुल्ला खान got a chance to play today. The 19-year-old couldn't really get going though, and 242 looked honestly a healthy score. I think halfway mark पे definitely Peshawar would have fancied themselves, but failing to defend 242 games in a row is unbelievable stuff. Pitch जितनी मर्जी flat हो, I think 240 was defendable. And it did look defendable at the start because Multan were 28 for 2. मुजीबुर रहमान got rid of मसूद. अरशद इकबाल ने रिजवान को चला गया. भाई रिजवान चला गया, मसूद चला गया, उनके मेन बैट्समैन तो आपने शुरू में आउट कर लिए, फिर आप कैसे 244 कंसीड कर सकते हो उन्हें. रॉसो, अच्छा यहाँ ज़रा एक बड़ी अच्छी टैक्टिकल गेम हमें देखने को मिली बिकॉज एट द स्टार्ट पेशावर लाए मुजीबुर रहमान को, द अफगानी स्पिनर, and he had Rosso in a fix. Rosso could not read the ball. Right जा रही है, left जा रही है, paid out many dots, and Peshawar were on top. Then what happened? Multan promoted Pollard to number 4, an inspired proactive tactic, and Pollard took on Mujibur Rahman, hit him for 3 sixes in a row because Mujib एक off spinner है, so he is better against left-handers than against right-handers. Pollard is a right-hander, so he was able to take on Mujib, while Rosso is a left-hander, so he struggled. अच्छा, अब क्या किया ये अब क्या किया पेशावर वालों ने? उन्होंने कहा पोलार्ड राइटी है और ये मार रहे हैं मुजीब को, सो दे ब्रॉट इन उस्मान कादिर, द लेग स्पिनर, टू गेट रिड ऑफ पोलार्ड. एंड दैट्स वेयर पोलार्ड, द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर, मेड द डिफरेंस. डिडंट केयर ये उसका नेगेटिव मैचअप है. टॉन्क्ड उस्मान कादिर फॉर 4 बाउंड्रीज इन ओवर, टॉन्क्ड हिम फॉर कपल ऑफ सिक्सेस. वहाँ पे उसने गेम बदली. दैट्स द साइन ऑफ अ क्लास प्लेयर व्हेन दे कैन हिट आउट अगेंस्ट देयर नेगेटिव मैचअप. बॉलिंग में वहाब रियाज, पिक ऑफ द बॉलर्स फॉर मी.
I think Wahab Riaz today is one of the best bowling performances of PSL8. Economy of 8 in a game like this, took a crucial wicket, and he was bowling the difficult overs. He was the one who slowed down Multan's momentum when Rosso and Pollard were going haywire. In fact, he is the one who got rid of Pollard, the massive wicket which somewhat brought Peshawar back into the game. Death में again Multan to game ले चुका हुआ था. Then this guy came and bowled a fabulous over, gave away just 1 and 4 balls, and with 2 चौके पड़ गए थे. But that's where he really brought Peshawar back into the game. A great performance by Wahab Riaz. बाबर की ज़रा बात की जाए, ठीक है आज उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, बट फिर फील्डिंग के दौरान ही wasn't feeling very well, had to go to the dressing room. We hope he gets better soon, but it didn't seem like a major issue. I think some level of sickness perhaps हो गई होगी. Tom Kohler-Cadmore took up the captaincy reins. कैप्टनसी वाइज ऑनेस्टली इतने टैक्टिक्स नहीं थे, बिकॉज मेन ये मैचअप्स वाला बैटल पॉलार्ड के साथ स्टार्ट में ही हुआ था, एंड ऑनेस्टली तब तक मुल्तान अच्छी खासी लीड ले चुका हुआ था. अजमतुल्ला उमर ज़ई गॉट टोंक्ड फॉर अ लॉट ऑफ रन्स. साइम अयूब से भी आज 2 ओवर कराए, which is very interesting, but for some reason the experiment worked. He bowled fairly well, 1 for 22, got a wicket as well, dismissed the dangerous Khushdil Shah. Well, he is usually dangerous, but in this game couldn't get going at all. Khushdil Shah, I think, brought Peshawar back into the game. Sorry to say that for Khushdil, but today was really an off day for him. अगर इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिच पे आपकी स्ट्राइक रेट इज लेस देन 130, दैट्स अ डेफिनेटली अ प्रीटी मैसिव इशू. खासतौर पे आप बॉल्स भी खा रहे हो, आप 14 बॉल्स आपने खेली हैं, लीविंग लेस बॉल्स फॉर द अदर बैटर्स. रॉसो की हमने अभी तक इतनी बात नहीं की, बिकॉज ऑनेस्टली भाई क्या बात करें, इस बंदे ने PSL को आग में रख दी है. पहले क्वेटा खिलाफ जैसे बैटिंग कर रहा था, कपल ऑफ 70s अनबीटन इनिंग्स, टुडे 121, हिज सेकंड सेंचुरी इन द PSL. A strike rate of 237. This is the highest strike rate for any century in PSL history. Looked absolutely unbeatable today, hitting balls to all corner of the ground. Only part where he struggled was against Mujib at the start of the innings, and really उसके अलावा almost a faultless innings you can say for him. Anwar Ali, Osama Mir at the end with the bat. एंड शुरू में ना PSL के मुल्तान का बड़ा मसला था, उनकी बैटिंग डेप्थ नहीं थी. अब उनकी काफ़ी बैटिंग डेप्थ हो गई है, बिकॉज अनवर अली को भी टीम में ले आए हैं, ओसामा मीर की बैटिंग काफ़ी इंप्रूव हो गई है. टिम डेविड अनफॉर्चुनेटली आज नहीं चल पाए. आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम इन एक्शन टुडे, बट स्टिल मुल्तान मैनेज टू गेट ओवर द लाइन फेयरली कंफर्टेबली इन द एंड. एंड ये सब छोड़ो अब ज़रा. 2 दिन पहले क्वेटा चेस 240, आज मुल्तान हैव चेस 240. तो ये जो 2 टीम है ना, क्वेटा मुल्तान, ये बड़ी डेंजरस है. और कल इन्हीं दोनों का मैच है, वो भी रावलपिंडी स्टेडियम में. तो मैं फुली तैयार हूँ कि कल 260 270 का स्कोर होने वाला है, एंड रियली आई कांट वेट फॉर इट. मैं किसी PSL में मैच के लिए इतना हाइप्ड अप नहीं हूँ जितना मैं भी क्वेटा वर्सेस मुल्तान के लिए हुआ हूँ. राइट देन, दैट्स अ रैप फ्रॉम द क्रिकेटिंग आवर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.